with the session. A very good afternoon to you all. And namaskar. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है to all the speakers, participants, and my colleagues from state missions and the FPOs. धन्यवाद हमारा ये सेशन। मैं एक बस रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सब म्यूट पे रहें, इंक्लूडिंग and the speakers, and then once we go ahead with the agenda, and then we'll have the session started. Thank you. So हमारा ये आज का जो सेशन है is on SecuFarm program for providing rural livelihood, and this is the fifth session in a series of webinars that WRMS has been conducting for the past 3-4 months now, and we've had various discussions on these topics. This is the first time that we are doing a webinar for rural livelihood, wherein sub-state missions or state FPOs and हमारी associate partner agency from DC. उनके quick background of the session that we are going to have, and what is that we all are here to discuss about and to know more from all the participants. We are doing these sessions, like I said, in association with SDC, which is the Swiss Agency for Development and Cooperation. I'll have the official Ms. Divya address you all and share her point of view. But before we move to that session, I just wanted to touch very briefly संक्षेप में कि ये सेशन में हम क्या हमारा उद्देश्य है, या हम इससे what is that we are going to discuss and how we are going to proceed further, and obviously what would be the outcome from that. So what we are trying to do in this session is, through these sessions rather, is we are trying to attempt to explain and also understand what are the different challenges, what are the different issues that are faced in while creating opportunities in agricultural livelihood. From that, we also understand that how the SecuFarm program can actually help sustain farmers' livelihoods and help them increase their income, and also to stabilize it, and to increase their farm income. And while we do this, while we move into the sessions and we interact with all of you, we'll try to explore the possible opportunities to collaborate, to work along with you all, with different state missions, with FPOs, and to see how we can roll out these SecuFarm programs in partnership with I would say, and I would wish that most of you, and to take it and to scale it up at a pan-India level. With this, I once again thank you all to participate and to join this session. And I would like to call upon Ms. Divya from SDC, from Swiss Agency for Development and Cooperation. It is commonly known as SDC. Ms. Divya, she is the Senior Thematic Advisor for Climate Change and Development Division. Ms. Divya, over to you, and thanks for joining us this afternoon. Thank you so much, Amitesh, and thank you so much for also giving me this opportunity to be part of this very interesting webinar series, which is... I'm sorry. Not okay, it was yours. Multiple instruments all around you. I understand. There is always this issue. Apologies for that. Yeah. So I must say that SecuFarm intervention, which we will be, of course, presenting later on. I think Anuj is going to be talking about that. It's a very interesting approach. But overall, if you look at in the setting of India, we all know that agriculture as such plays a very significant role in the Indian economy, and is even today engages more than 50% of the total population, working population in the country. It is also very evident for, I think, farmers across the country that they face a number of challenges because of variations in the yield, variations in the productivity, which is resulting from uncertainty of numerous natural as well as market-related factors around them.
And the government of India and also the state government, they're all very well aware of these factors and are working very actively to address this need of enhancing and securing farmer incomes. And in that context, the governments have launched series of interventions, of course, which include, multiple agriculture-oriented schemes, extending the outreach of agri-extension services, supporting a nationwide crop insurance scheme to offer safety nets for farmers, as well as focusing on strengthening farmer livelihoods through rural livelihood missions across the states. So a lot of effort is going on at the moment, but of course there are limitations and challenges under all these interventions which are going on, and I think SecuFarm provides a very exciting opportunity to explore new ideas or new thought processes of how the same objectives can be achieved. SDC, as such, Switzerland, as part of its development cooperation strategy, also focuses on promoting climate resilient as well as risk averse development of vulnerable communities, to reduce their risks in the around them. And this strategy calls for development of initiatives which can help local communities adapt and prepare for climate related as well as market related hazards or events or interventions which can affect their incomes. Of course, also the focus through their program on food security is on effective agricultural innovation and extension systems. So Switzerland actively works in the space where SecuFarm places itself. And I think that's the reason that we are, our partners with WRMS to try and test this particular innovative approach for whereby incomes of smallholder farmers can be protected against the series of factors which affect them. So I'm very happy to be part of this webinar today, because I think discussions today can help contribute towards refining this approach for future, and as well as assessing how this kind of innovative thoughts and processes can be embedded in the ongoing programs of the government. So thank you so much, Ahir. I pass it back to you. Thank you for your words, and we really appreciate the partnership and the way it has developed over the years. And from here, without wasting much time, I would like to call upon Mr. Anuj Kumbal. He's the CEO, co-founder with WRMS, and Anuj is having more than 20 years of experience in project finance and risk management, and he would take us through the SecuFarm program. Anuj, over to you, and thanks for joining us. Thanks a lot, Amitesh. I hope I'm audible and loud enough for everyone to hear me. Yeah. Thanks a lot. And thanks, Divya, for a very good start to this webinar. And we hope that we will be able to talk about SecuFarm and what we have done in it and what we intend to do in SecuFarm as far as our work in agriculture is concerned. And I'm happy to talk about what we have achieved in partnership with SDC and how they have helped us in developing this concept and expanding it in India. So I think the term SecuFarm is, for most of the people, it's a new sort of concept, a new term, and a lot of people are wondering what SecuFarm is and what are we going to talk about. Primarily, as you can see, the word farm suggests that we are talking about agriculture and agriculture related activities, and that's what we work in the area of. And Secu definitely in a way suggests that there is some sort of security in agriculture is what we intend to provide through this program. But before that, how did we reach here? And I'll try and be as bilingual as I can. So how did we reach here? हम यहाँ इस journey को कैसे हमने कैसे पार किया और हम यहाँ पे कैसे आए? I'll also be talking about it. Which means that we will be talking about what WRMS is and how did we start this activity. So WRMS as a company started in 2004, primarily working in the area of weather insurance when we started. Am I audible? You are audible. Sure. In case I'm not, just let me know so that I would immediately correct. So we started in 2004
as primarily as a weather insurance designers and developers and implementing organization. But over a period of time, we realized that weather insurance requires a lot of work on ground with farmers and to make them understand how do they tackle weather first. So we just can't go and insure weather unless farmer understands what's the best way to manage weather. And that's when we started offering integrated weather advisory and insurance. That was from 2009 to 17. And over the period of this last 10 to 15 years, what we have learned is it is very important first to minimize the risk and help farmer get do better agriculture. And once they are able to do better agriculture, वो अपना production और अपनी risk कम कर पाएंगे, तभी हम बची हुई risk को insure कर पाएंगे या उसको उसका assurance दे पाएंगे. Second problem, what we faced and what we realized was that most insurance solution which we were offering or suggesting or which governments were offering were centered around settling claims at a level which is village or a block. मतलब farm level पे कोई insurance solution नहीं था और नहीं है अभी भी. So how do we tackle that problem? Farmer had always had this question: I have lost the crop, however I have not got the compensation. So this bugging question was difficult to answer. Why an individual farmer is not getting the claim in spite of losing the crop due to no fault of his or her. So while finding answers to these questions, we were able to understand that probably with technology in last 10 years of development in technology and mobile communication, we should be able to utilize the technology to solve this problem of offering a risk management solution at a farm level. But prior to offering this solution, we should also address the key fundamental risk of agriculture, which is how do we save the crop of the farmer or how do we enhance his productivity? Because farmer will not be able to pay for the insurance or assurance solution unless he gets a gain or in productivity and in output. So that's the crux of SecuFarm, that how do we first work on developing, making the agriculture more sustainable for the farmer, help him reduce the cost or enhance the productivity, and finally, how do we cover his risk? And in doing that, we started partnering with a lot of organization. So one such partnership is also with SDC, where they're supporting us in the capacity building, promotion, development of the training programs, and reaching out to the farmers to explain them the concept. Apart from that, we are working with UPL, we are working with ICRISET, IGF, a lot of agrochem companies, including and crop output companies, PepsiCo. उसके अलावा हम Ambuja Cement Foundation के साथ हमने काम किया इसके अंदर. We started working with Johar, which we have a very good partnership with. We started working in Bengal. In Punjab, we have started working with a seed company in potato, with Tata Trust in Maharashtra and in UP. And this way we have been able to reach out to farmer, explain them the product. So आज की तारीख में हम करीब 20 agencies के साथ काम कर रहे हैं on various aspects. And 2020 में ही first 9 months की मैं बात कर रहा हूँ, in fact not calendar year, April 1 से December तक, we have reached out to around 5,000 farmers, and I'm talking about just a Kharif of 2020. जब 5,000 farmers को हमने solution दिया है 9 different crops के लिए और 11 different states में we have reached out and we have offered this solution. And those 9 crops include crops like chili, wheat, paddy, potato, tomatoes, and a few more other crops like cumin, where we've offered, and cotton, where we've offered this solution. And it's an end-to-end solution starting from the seed and sowing and soil advisory right till the end of supporting and harvesting and sale of produce of the farmer. So that's what SecuFarm is. We'll talk about it. These are just the numbers about it. So coming back to the concept and why we have started this, as I've mentioned, that the primary problem which we found in agriculture in India is basically a volatile income and the risk associated with agriculture, prompting farmer not to invest in it. Basically, farmer is risk averse. They try and see that if they invest in the crop, put more money in it, use better equipment, quality seeds, or more invest more in fertilizer,
or agrochem. We have seen these things firsthand in various states, including West Bengal and Jharkhand, where farmers are actually not investing in much in the crop because they think that if they lose crop, they will lose the money. And that lack of confidence in using or sustainable use of smart technology is basically driving the yields low. It's basically bringing them down, and productivity and prices are going down because the quality gets suffered. How do we address this problem? So what we started thinking is that, is there any way we can offer a holistic solution which starts with helping farmer in the farming, and offer him a solution for how best or better to how best to do the farming, from, as I said, from the soil stage till the harvesting stage, and how sustainably we can reduce the use of water, use of pesticide or fungicide, while ensuring that the crop production does not get suffered. And that's where the technology use was initiated, and we were able to help farmers in improving either the productivity or reducing the cost. And there are a lot of case studies to it we'll be talking about in few slides. And at the end of it, for some crops where the farmer doesn't have adequate linkages, like tomatoes, also in Haryana and in Jharkhand, like potatoes in northern India, where we are in UP, we have been able to, or cumin, for example, we have been able to generate market linkage, or provide market linkage, or sell the produce of the farmer. This has helped farmer in getting the guaranteed income as well. So we were virtually able to guarantee an income to the farmer in these areas. And I'm talking about a lot of them being a very small farmer of less than 1 acre. Next slide, please. So what is our service offering? We basically provide three things. Start with, one is advisory and support in terms of dynamic alerts and advisory at each one in time, whether you have a smartphone or you don't have a smartphone. वो एडवाइजरी या तो आपको फोन पे कॉल पे आएगी, एसएमएस पे आएगी, या फिर आपके ऐप में आएगी अगर आपके पास स्मार्टफोन है, और या व्हाट्सएप पे आएगी. I mean, medium agnostic हैं चारों, all four mediums we are being able to give advisory to the farmer, and we touch with the farmer every week. So that's an advisory, and that advisory is for the farm. Each farm is geotagged. हर farmer को geotag किया जाता है और उसके ऊपर उसको advisory दी जाती है. So that's an advisory which is a very bespoke or very specific advisory for the farmer. Second thing we do is we assure farm yields and give assurance to the farmer that if he does not or she does not get the specific yield for each crop, or a specific plant count, depending upon the crop, in certain cases it is also specific plant counts, then we will compensate for any loss to the farmer. And for various crops, we have a different compensation formula which is discussed with the farmer. But ideally, our job is well done if we have been able to not compensate with the farmer, but actually be able to enhance his yield or her yield to a level which gives him or her more money. So that's the primary motive to start it. But then we assure the yield as well. The third thing we do is that we provide input at a lesser than market cost and the quality input. The more important thing is that these inputs are provided at the time the farmer needs it, or very specific to what actual problem at the farm is, which is dynamically monitored by us. तो हम उस प्रॉब्लम को रोज बेसिस और वेदर डेटा, हमारे रिमोट सेंसिंग डेटा सेट से प्लॉट लेवल पे मॉनिटर करते हैं, और जो फील्ड विजिट्स होती है उनकी इमेजेस से, और उसके बेसिस पे वी एडवाइस फार्मर व्हाट दे शुड बी डूइंग एवरी वीक. और उससे रिलेटेड अगर उनको इनपुट की जरूरत है, दे आर फ्री टू बाय इट फ्रॉम एनीवेयर, बट इफ रिक्वायर्ड वी प्रोवाइड देम. एंड लॉट ऑफ this work is also done with support of the organization. Like in Johar, we basically get the inputs from Johar FPC only. I mean, they are providing us the inputs, so we are supporting them in that, reaching out to the farmer and offering this. So this and the final thing is that output support, wherein we support the farmer in selling the output. So just an example, in the sowing advisory, we tell farmer when and how to sow,
and also what seed should be sown given the soil. So we do the soil testing of the area. We basically collect samples of all the farmers and test about starting with 10% and see the variability in the soil data. अगर soil samples में बहुत ज़्यादा variation है तो हम ज़्यादा test करते हैं, बट अगर नहीं है तो हम उसके बेसिस पे फार्मर को एक एडवाइजरी देते हैं फार्मर्स को कि उनको सॉइल ट्रीटमेंट अगर कुछ करवाना है, if pH is high or low, then what soil treatment is possible and what else in terms of nutrient management they can do before the sowing. After that, we give the advisory on sowing, what seed to be sown. Like in cotton, we had a complete list of with analysis of which is the best cotton in Haryana in these regions. And that analysis was, with that help, we gave farmer the right seed for sowing. Once done, we give farmer an advisory every week or every 15 days on when and how much to irrigate. So there is an irrigation alert which uses three kinds of data. One is weather station data, जो हम हर गांव में लगाते हैं. Second is thermal images, remote sensing images, जिनको हम काम में लेते हैं ये जनरेट करने के लिए कि कहाँ पे पानी रूट जोन में कम हो गया है और वहां पे पानी की जरूरत है. So we give this advisory at a root zone level, that how much water and when should the irrigation be done and for how long. After that, every step of the way we tell farmer when the pest and disease is likely, conducive conditions are there, again based on weather data or current pest load, जो every fortnightly हमारे टीम विजिट करती है. उसके अंदर हम फार्मर के जो खेत की इमेजेस लेते हैं और रिमोट सेंसिंग से जो डेटा आता है प्लस वेदर डेटा से हम ये पता लगाते हैं कि पेस्ट और डिजीज लोड कितना है या कितनी पेस्ट और डिजीज आने की संभावना है, और उसके बेसिस पे फार्मर को एडवाइजरी देते हैं. ज्यादातर केसेस में अगर जरूरत है तो प्रोफिलेटिक स्प्रे करवाते हैं, एंड कुछ केसेस में वी गेट द spray done only when there is a sign of pest which is there, depending upon the pest and disease. For all the cases, since we have a weather station and we generate forecast, farmer को एक weather alert और advisory दी जाती है जिसमें farmers जिसका उपयोग farmer कर सकता है अपने irrigation management के लिए और crop को save करने के लिए भी. And इसके लिए again as we said that we use technology. One is weather station, IoTs लगाई जाती है, soil moisture sensors लगते हैं जहाँ पे हम irrigation और weather advisory देते हैं. Lastly for pest हम pest traps भी लगाते हैं. So ये सारे इक्विपमेंट्स और रिमोट सेंसिंग डेटा, सैटेलाइट डेटा को यूज करके हम फार्मर को जो एडवाइजरी देते हैं वो बिल्कुल वर्नाकुलर लैंग्वेज में होती है. तो बंगाली में वो एडवाइजरी फार्मर को बंगाली में जाती है, एंड हरियाणा में, यूपी में वो हिंदी में जाती है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हम जहाँ काम कर रहे हैं सेम एडवाइजरी तेलुगु में जाती है, एंड महाराष्ट्र में मराठी में, गुजरात में गुजराती में. सो ऑल एरियाज जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं एडवाइजरी एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में जाती है, लोकल भाषा में जाती है. भले ही वो किसी भी रूप में जा रही हो, वो एडवाइजरी एक लोकल भाषा में जाती है. And the other option is English and Hindi, which is always there in the application. And application में भी ये सारी languages mapped हैं और इन languages में advisory जाती है. लास्ट में फार्मर को हम टेक्नोलॉजी सपोर्ट देते हैं हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टिंग के लिए भी और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी. हमने अभी कुछ सेंसर्स डिवाइस की हैं जो एफ्लाटॉक्सिन लेवल को सेंस करते हैं ग्राउंडनट में. वी आर टेस्टिंग दो सेंसर्स. ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है क्योंकि ग्राउंडनट के अंदर ग्राउंडनट की सेलेबिलिटी इस पे डिपेंड करती है कि इसमें एफ्लाटॉक्सिन लेवल्स कितने हैं. सो सिमिलरली पोटैटो के अंदर ग्रीन और स्कैब वाले पोटैटो आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर यूजिंग द सेम स्पेक्ट्रल कैमरास. We are developing those solutions and applying it. We are testing it in potato and groundnut right now. तो उन दोनों के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग कैसे की जा सकती है और खराब प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया करके अलग कैसे किया जा सकता है ताकि बाकी प्रोडक्ट की वैल्यू अच्छी मिल सके. सो दिस इज एन ये पूरा सर्विस प्रपोजिशन है जो फार्मर को दिया जाता है. कुशल, सो एक एग्जांपल है इसके अंदर पोटैटो फार्मर्स के साथ जो हम 1000 फार्मर के साथ वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं, जहां पे हमने फार्मर को
बेसिकली एक इंसेंटिव बेस्ड यील्ड एश्योरेंस पैकेज दिया है, जहाँ पे फार्मर का स्टार्टिंग जो यील्ड है वो 8,000 किलो पर एकड़ की यील्ड कवर करते हैं। बट अगर फार्मर्स सारे पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो हमने सजेस्ट किए हैं बहुत सिंपल है, सॉइल से लेकर सॉइल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीड और ये सीड ट्रीटमेंट, ये सारे प्रोसेसेस और इरिगेशन टाइम पे कर रहा है, तो वो 8,000 kgs का यील्ड एश्योरेंस 9,700 kgs का हो जाता है। मतलब अगर उसने सारे प्रैक्टिसेस फॉलो किए तो उसको इंसेंटिव है कि अगर उसकी यील्ड 8,000 की जगह 9,700 से कम आती है तब हम उसको कॉम्पनसेट करेंगे। बट अगर उसने प्रोसेसेस फॉलो नहीं किए हैं तो उसके लिए उसी तरह की पेनल्टीज होती हैं जो फार्मर को समझाई जाती है कि अगर उसने प्रोसेसेस फॉलो नहीं किए हैं तो वो रिस्क उसकी है और उसको वो रिस्क लेनी नहीं चाहिए। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी कॉम्पनसेट फार्मर एट अ हायर yield if he is following the processes। तो उसको इंसेंटिवाइज करते हैं कि आप प्रोसेसेस फॉलो करें ताकि आपको हायर yield मिल सके, और अगर वो yield अचीव नहीं होती है तो हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। सो यही चीज हमने पोटैटो में की थी 2019 में। इनफैक्ट काफी ज्यादा ब्लाइट आया था, उसके बावजूद भी कुछ हमारे फार्मर्स को बहुत भी लॉस हुए थे, बट वो मार्केट के लॉसेस से कम थे। बट ऑलमोस्ट 85% फार्मर्स ने वो हमारी एडवाइजरी को फॉलो किया था, और उसके बाद जिनको लॉस हुआ था उन्हें कॉम्पनसेशन मिला था ऑन अ हायर यील्ड। और 15% फार्मर्स में से करीब 5% फार्मर ने बिल्कुल एडवाइजरी फॉलो नहीं की थी, तो प्रोग्राम में से हटा दिए गए थे। 10% फार्मर्स की हमने सेम यील्ड 8,000 के ऊपर उनको कॉम्पनसेट किया था। सो दिस वाज पोटैटो इन वेस्ट बंगाल। एक एग्जांपल है जहां पे हमने करीब इस लास्ट सीजन में 600 एकड़ कवर किए थे। नेक्स्ट स्लाइड। Anuj, Sorry, yeah. yeah, I'm sorry to intervene. I think I saw some messages that people cannot understand. वो लोग हिंदी में ही प्रेजेंटेशन उनका शायद रिक्वेस्ट है, शायद FPO मेंबर्स हैं, मुझे भी मालूम नहीं था पहले, पर उनकी तरफ से शायद निवेदन है कि हम हिंदी में ही अगर बात कर सकें। तो तो एक्चुअली मैंने इंग्लिश इसलिए साथ में जोड़ा था क्योंकि इसमें FPOs का जो स्पैन है वो नॉर्थ, साउथ इंडिया एंड वेस्ट से ईस्ट नहीं, वो मैं समझ सकती हूँ, पर प्लीज डू कंटिन्यू। Right. So another example, and most of you can read in English, so I'll also talk in Hindi. एक जीरे के अंदर भी हमने इसी तरह की सर्विस दी थी, गुजरात और राजस्थान दोनों में, जहाँ पे कुछ लॉसेस फार्मर को हुए थे। इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग आवर एडवाइजरी, उन्होंने हमारी सारी एडवाइजरी दी थी। और इन दोनों लोकेशंस में हमने जो जीरा उगाने की कोशिश की थी वो लो MRL जीरा था। द आइडिया ये था कि MRL लो रहे तो इसमें पेस्टिसाइड का उपयोग या यूज काफी कम करने को कहा गया था, इनफैक्ट नहीं करने को कहा गया था आफ्टर 35-40 डेज ऑफ क्रॉप। और इसीलिए कुछ फार्मर्स को बहुत हैवी डिजीज अटैक के कारण बहुत कम फार्मर्स थे ऐसे जिनको नुकसान हुआ था, और उनको हमने फिर कॉम्पनसेट किया था। और गुजरात में एक फार्मर इसी तरह क्रॉप लॉस हुआ था, उनको रेन के कारण, उनका लो लाइंग एरिया में खेत था, तो रेन होने के कारण उनके जीरा जो हार्वेस्टिंग स्टेज पे आ गया था उसको नुकसान हुआ था। एंड दैट लॉस वी कॉम्पनसेटेड टू द फार्मर, हमने उनको उसका मुआवजा दिया। बट इन बोथ द केसेस गुजरात में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ काम किया था, और उनको हमने एक एनालिसिस करके दिखाया था कि उस गांव की यील्ड कितनी है और हमारे फार्मर्स की यील्ड कितनी है। उसमें हमारे फार्मर्स की यील्ड इन जनरल, इन स्पाइट ऑफ पुअर वेदर कंडीशंस, गांव की यील्ड से करीब 20% ज्यादा आई थी। ये एनालिसिस हमने बैंक ऑफ बड़ौदा को भी प्रेजेंट किया था, जो इनके साथ हम इस पे काम कर रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड। कुशल, नेक्स्ट स्लाइड। श्योर, थैंक यू। हरियाणा और पंजाब के अंदर हम कॉटन फार्मर्स के साथ पिछले 3 सीजन से काम कर रहे हैं। इस बार हमारा ये तीसरा सीजन था, एंड वी हैव कवर्ड 1000 फार्मर्स इन हरियाणा एंड पंजाब पुट टुगेदर। और ये इनमें से करीब 50% फार्मर हमारे साथ पिछले 2 सीजन से जुड़े हुए थे, और 50% नए फार्मर्स हैं। मतलब पुराने सीजन के फार्मर से करीब 75% फार्मर ने वापस सब्सक्राइब किया हमारी सर्विस को, और नए बाकी फार्मर्स जो थे वो नए फार्मर्स थे, बट उन्हीं गांव में जहाँ पे हम ऑलरेडी काम कर रहे थे। और यहाँ पे करीब हम 100 गांव में काम करते हैं।
अलग अलग सर्विसेज देते हैं, और कॉटन, पैडी और वीट को मिला के हम 100 गांव विलेजेस कवर करते हैं। कॉटन एंड पैडी में खरीफ में 100 गांव, जहाँ पे करीब 1,500-2,000 फार्मर कवर होते हैं, और वीट में अगेन 150 गांव दोनों रीजन में, जहाँ पे करीब 1,500 फार्मर कवर होते हैं। सो ये प्रोडक्ट और ये सर्विस हम कॉटन, पैडी और वीट में हरियाणा और पंजाब में दे रहे हैं। एडवांटेज फार्मर को ये रहा है, वन सबसे बड़ा वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ी है। उनका जो पेस्ट मैनेजमेंट पहले काफी लेट हो जाता था और काफी नुकसान हो जाता था कई बार, वो काफी बेटर हो गया, क्योंकि हम व्हाइट फ्लाई जो उनका सबसे बड़ा पेस्ट है उसकी एडवाइजरी एकदम टाइम पे देते हैं और फार्मर्स को बताते हैं कि उनको कब स्प्रे कर लेना चाहिए, एंड उससे जो उनका पेस्ट मैनेजमेंट है वो बेटर होता है। प्लस जो राइट केमिकल है उस समय के लिए जब वो स्प्रे कर रहे हैं उसकी हम पूरी एडवाइजरी देते हैं उनको। इसी तरह वीट में जो मेजर रिस्क होती थी वो वीडीसाइड को ढंग से नहीं लगाने पे कई फार्मर्स का लॉस होता था, तो हमने उसके एप्लीकेशन की ट्रेनिंग दिलवाई फार्मर को, एंड हम उनको एग्जैक्ट बेसिस द वेदर कंडीशंस और इरिगेशन एडवाइजरी के साथ हम उनको ये भी बताते हैं कि उनको वीडीसाइड का उपयोग कब करना चाहिए, और मिट्टी के अनुसार किस तरह की सॉइल है उनकी और किस तरह का वीड है, कौन सा वीडीसाइड काम में लेना चाहिए। सो ये एडवाइजरी हम फार्मर को देते हैं, और प्रोडक्ट भी चाहिए तो प्रोवाइड करवाते हैं। सो बेसिकली इन सबको करने के लिए जो डिवाइसेस और जो टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है वो हमने सारी टेक्नोलॉजी इन हाउस डेवलप की है। ये एक एग्जांपल था ग्रेडेशन का, जिसके अंदर हमने एक स्पेक्ट्रोमीटर से पोटैटो का ग्रेडिंग किया है। स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा पोटैटो स्कैब है जिसमें दाग लगा हुआ है या कट है, और उसको वो अलग कर देता है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एडवाइजरी और ये सर्विसेज हैं वो 4 माध्यम से या 4 मीडियम से फार्मर्स के पास जाती हैं, या तो एसएमएस या व्हाट्सएप या ऐप या कॉल, और कंटिन्यूस बेसिस पे फार्मर को हम एडवाइस करते रहते हैं और उनको बताते रहते हैं। एक एडवांटेज और है, अगर फार्मर के कोई सवाल है तो वो ऐप और कॉल के थ्रू हमें पूछ सकते हैं, और बहुत सिंपल है। ऐप के अंदर भी उनको सिर्फ और फोटो खींचना है और एक ऑडियो रिकॉर्ड करना है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, और वो हमारे एक्सपर्ट उसको चेक करेंगे, और उसी विंडो में जहां पे उन्होंने वो फोटो खींची और वीडियो दिया है उसी में उनको रिस्पॉन्ड भी कर लेंगे। जस्ट लाइक व्हाट्सएप चैट, वो रिस्पॉन्स उनके पास पहुंच जाएगा कि उनको क्या करना चाहिए। सो ये बहुत सिंपल तरीके से हम फार्मर को एडवाइस कर पाते हैं उनके सवालों से के बारे में कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उसको एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, दैट्स इट। सो ये SecuFarm सर्विस हम अभी कुछ FPOs के साथ ऑलरेडी कर रहे हैं। इनफैक्ट जोहार के प्रोजेक्ट के अंदर हम ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं LNG के साथ, जो CEO हैं ईस्ट सिंहभूम FPC के, और उन्होंने काफी सपोर्ट किया है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट, और ऑल्सो ये कॉन्सेप्ट को समझाने में फार्मर को, और बहुत छोटे छोटे फार्मर ग्रुप्स हैं वहाँ पे, मतलब 10 डेसिमल के बराबर कईयों की जमीन है, और उसको हमने कवर करने की कोशिश की है, उनको जियो टैग किया है। और ये इनिशिएटिव हमने पिछले सीजन में ही चालू किया था, तो टमाटर में करीब हमने 70 फार्मर को कवर किया है, और उनके टोटल एकरेजेस हैं 70 फार्मर के, वो एक्चुअली सिर्फ 20 एकड़ हैं, क्योंकि लैंड साइजेस काफी कम है, बट ये ऑफरिंग हमने पहली बार चालू की है बहुत छोटे फार्मर के लिए जौहर के अंदर। और लाइवलीहुड में हमें ये लगता है कि सिंस ये यील्ड एश्योरेंस प्रोग्राम है और एक क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर लाइवलीहुड में हम स्पेसिफिक इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, और उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी को मैक्सिमाइज करके उनकी रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये इसलिए एक लाइवलीहुड के लिए, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और नया प्रोग्राम है जो हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, 5,000 फार्मर जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनमें करीब 95% फार्मर ने इसका पैसा खुद दिया है, कहीं पे भी किसी और ने उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया है। सिर्फ 5% फार्मर के केस में ये कंट्रीब्यूशन 2 जनों से आया था, कुछ फार्मर और कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमें इसका पैसा दिया था, बाकी सारे जगह पे फार्मर्स ने खुद ने इसका पेमेंट किया है। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं जवाब। थैंक यू अनुज।
धन्यवाद आपका भी फॉर डिटेल बट वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आई थिंक सभी सभी आई थिंक ये सेशन पहले होने का इसलिए भी कारण था कि जो एफपीओ से हमारे किसान भाई और ऑफिशियल्स या जो भी जुड़े हैं, किस तरह से उनके फार्मर्स को सिक्यू फार्म सर्विसेज के जो जो बेनिफिट्स हैं, जो फायदे हैं, वो किस तरह से हम उनको डिटेल में बता पाए, ताकि उनको वो रिलेट कर सकें उससे, और वो उनको भी लगे अगर कि हाँ इन सर्विसेज की या ऐसी योजनाओं की जरूरत रहती है। मैं सिर्फ 3 पॉइंट में व्हाट आई आल्सो अंडरस्टैंड, और बाकियों की बेनिफिट के लिए भी, कि थ्रू सिक्यू फार्म प्रोग्राम्स एफपीओज और फार्मर्स को जो हम रीच आउट कर रहे हैं और जो सर्विस कर रहे हैं, उसमें अगर एक एफपीओ और एक मिशन, स्टेट मिशन जो है, अगर वो एक एक पॉलिसी मेकर के एंगल से या एंटिटी के एंगल से देखें, तो किसानों को कस्टमाइज्ड जो सॉइल न्यूट्रिशन और पेस्ट एंड डिजीज के अलर्ट्स मिलते हैं। मैं मेन पॉइंट्स पे जाता हूँ। उसके हिसाब से उनको जो एडवाइजरी मिलती है एकदम स्पेसिफिक, एंड उसी के अराउंड उनके लिए यील्ड एश्योरेंस या उन्हीं के लिए वेदर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उनको किसी भी आपदा के टाइम पे अगर कोई क्षति होती है, तो उससे उनको जो है वो प्रोडक्ट से उनकी उनकी इनकम को जो है वो बचाया बचाया जा सकता है। So these are very good points. I think question के लिए open है, या I can take all the questions at the end and go ahead with the session. Yeah, that would be good, Amitesh. I think we'll do that. I'll do that. Thanks once again, Anuj. And on that note, I'll like to call upon Mr. Ashanlang Langdo. He's the CEO of COO of Meghalaya State Rural Livelihood Mission. Good afternoon, Mr. Langdo. And just a brief background, he has more than 20 years of experience at various capacities at the state mission. And today, now he's leading the Meghalaya SRN. Welcome, and please, over to you. Okay, thank you so much for inviting me to this a very important webinar in which we will be able to share our experiences and also a few inputs that we have been working in rural development in the northeastern region of India, especially with regards to Meghalaya. So I'm been working with different agency from EFATs to now I am here in this program of National Rural Livelihood Missions in Meghalaya. So in fact, Meghalaya, we have started the NRLM program very late. That is somewhere in 2011. We have started the social mobilization. Then only in 2017-18 we are kickstarting the livelihood component of the NRLM program. As you know that in NRLM we are focusing on sustainable agriculture practices. So all across India, we follow the same pattern of these strategies to upscale and also to mobilize our farmers to enroll themselves in self-help groups, then later on into a village organization, then as and when they grow, then they can form into CLF and then into FPO. Right now in Meghalaya, we are reaching to the stage of federating all the VOs into CLF. So that is ongoing, the ongoing process. So back again to what livelihood intervention are we been doing in Meghalaya. Well, for sustainable livelihood agriculture practices, we are focusing on 3-0, like this. On 3-0, we focus on zero budget farming, where we mobilize our farmers, member of SSGs, to integrate their agriculture practice by adopting the sustainable agriculture practice, like
production of their own compost and also the pesticide, so that and also encouraging them to use the traditional seeds and also multiply the traditional seeds, so that they will not be depend on uh, on the market for their agricultural inputs. I'm very sorry that I cannot speak in Hindi. Some of the participants request me to speak in Hindi, so maybe some of the you may sum up in Hindi later on, but I cannot speak in Hindi. I'm very sorry. No Uh, problem. Yeah. yeah. So Meghalaya, as you know, we in Meghalaya, we are we are concentrating on a niche market. We don't have volume of the production, although we have very good niche products like cashew. We have turmeric, lakadong turmeric, which is one of the highest curcumin turmeric variety in the whole world. And then we have ginger, we have tezpata. All these we cannot, all our SSG who are involved in this, we cannot connect them to the conventional market. We have tried our level best to connect them with the conventional market. However, we have connected with Big Bazaar, we have connected with Reliance and some other buyers. But however, our our challenge is how we link them to this market. It is not possible. Our community, they can give in one truckload or in one time. Next time, if you require the products, they will not be able to supply. So that is a challenge that we face in Meghalaya and also in the whole of Northeast, because we don't have the channel for marketing of our agriculture products and horticulture products. However, as as per the guidelines of the government of India, SRLM, we are focusing on creating a social business entity, so that these challenges that we face now will be able to address. So what we did is we are mobilizing our village organization into a cluster of products, and then we federate them at a block level. So then they will collect their, then they will decide and collect their products at the block level or at the cluster level. And then what we did is, now because we cannot go with the normal market uh, channel. So what we did is we are focusing on the local market available within the state, within the district, and within the area where the farmer is comfortable with. However, we we thought that this will be the solution to the fate of the farmers for not able to to market their production. But hence, this is the challenges we have with us. And as a project, we are tie up with the different agency. We have the NABARD, we have SIDBI, we have uh, Khadi and Village Industry, we have the industry department, and few private players, so whom we are tie up, and then we starts to roll out the program with the farmers, so that they can be able to to sell their products. So we also what we did is we start a zero budget marketing strategies, uh, because we work with the poorest of the poor. We see zero poverty. So working with the poorest of the poor mean those who are very poor, who don't even have a plot of land.
most of them, they are wages and also the farmers who depend on the on the landowner for cultivation. So for these part of farmers, what we plan, we have done it in Meghalaya is we have uh, developed a strategy how the farmers will generate some money or some in kind, where what they did, they have a land bank concept. A land bank concept is where those villages where majority of the land are being controlled by the landlords. So what we did is we mobilized the SSGs, we mobilized the VO, and then we talk with the district administration and the block administration, and also the landowner, who are willing to give the lands free of cost or in a very nominal rate. And then from the NRLM part, what we did is we developed those land into a cultivable lands, and then the management of the land are being managed by the federation, the village level federations, and they allot the land to these poor households so that they can start their agriculture activities. So, but the farmers has to pay very nominal fees of using of using of the lands provided by the federation, and then whatever produce also they can sell it to the federation. Then the federation will adjust it from there on their uses of the land, and also they will get the market of their products. So in this way we are solving the problems of farmers who is having a landless farmers. I am able till here. Anybody have any question? Mr. Langlo, we'll take the questions at the end. I think that would be better. We can then summarize. But if anyone has any particular question, they can probably ask. I think we'll take it at the end of the session. Yes, yes. Okay. In Meghalaya, what NRLM is preparing after the post lockdown period is, because we have high incident of what I have told before, landlessness. So these are the problem, and also in other part of the Meghalaya we have a place, few district, around 5 district, Garo Hills region, where majority of people they are still practice the Jhum cultivation. Okay, but of late they have introduced the plantations, mean the permanent plantation. But however, like rubber, and then cashew, then arecanut, and then black pepper. So but these has been only in few pockets. Most of the area are under the Jhum cultivation. People are still practice Jhum cultivation. So the challenge before the project is how will we address this issue, because in Jhum cultivation, although they said that it is a very sustainable agriculture practice, however, but the problem is the degradation of the forest is very high. Then the ability of fallow land, now with increased population, the land ability with ratio of the population in those area now keep on increasing. So the fallow land left for Jhum cultivation is only for 1 year. So in that way, the fertility and the nutrient values of the soil of that area now is a question. So
from the department of the government, from soil irrigation, this and that, as you understand that they also have limited resources. They are not able to gather to all the land holding in the on all the 5 districts. So therefore, NRLM is taking into their in our charge that we are concentrating them on this zero farming system. So we are introducing them how they will be able to generate their own farm inputs from composting to seeds and also for marketing of their produce. So these are the challenges, and we are working on this. And the area in the last few decades has been infested uh, by terrorists. Just now, 4 years now, the peace has been going on. So these are the challenges that we have in this particular part of India. So therefore, the the social mobilization will have to take a long way to synthesize the community, so that the community will be able to take charge of themselves. So till today, the leadership role are being played by the NRLM functionary and community cadres. So the challenge that the task that we plan for this region is how we will be able to scale up the skills and also the professionalism of these livelihood cadres that we have been generated, so that they will be able to sustain the movement after NL closure of NLM, and also to manage the producer group that we have been formed in every villages, in every cluster, nook and corner of this region, so that the production and also the poverty of this region will be able to solve through the process of social mobilization and social business. So I'm also take this opportunity to request other panelists, other resource agencies who are here in this webinar, if we can collaborate with 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 all of you also, so that in the next few years we will be able to scale up the activities of agriculture production in this area. We have a huge potential. We have a huge potential. 50% of the banana sell in the banana market in Assam are being produced from this region. But we don't have, till today, we don't have the facility of go down. We don't have the facility of proper transportation. We don't have the facilities of regulatory market where the farmers can go and sell. But most of them, they have to go with a cycle or sell it on their own channel to this particular market station in Assam. So this is also one of the opportunity for the developmental agency to enter in these areas and also work on this particular issue. So the NRLM in Meghalaya, we are not only in Meghalaya, in whole of India, we have a target that we need to form around 10,000 producer organization in each state. Okay, so now Meghalaya, with a population of 25 lakhs, so we will not be able to form around 10,000. Maybe we can go up to 100 and 150 producer company. So this is also we need support
from all angles. As of now, we have formed only few FPO and we have registered only one at the state level. We have registered one federation who will do the collective marketing at the state level, and we are focusing on two, three products, that is ginger, turmeric, and broomstick. So these are the three major products that we are going to aggregate and sell it in the market. So with only these few words, this is my my session. If you have any question to ask me or to add or to whatever you from my point of discussion, please, you are most welcome. Thank you. Thanks a lot, Mr. Thanks a lot. Those were really, some good insight into the challenges. I also understand, and I think we all understand that the crop and the challenges both are niche. We have tried our hand in the past, but I think with your support and with sessions like these, we would be able to do some more good work in those areas. And I understand बाकी लोगों के लिए जो जो हिंदी में है, चंगन जी एक जूम प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, जो क्रॉप जला के जो प्लांट जला के जो करते हैं, जस्ट इन केस कुछ लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आई हो. सो ही वाज एक्सप्लेनिंग कि वहाँ के क्या चैलेंजेस हैं, और हम वो समझते हैं. एंड विल टेक द क्वेश्चंस एट द एंड इफ एनी. I would like to call upon Mr. Laki Gogai, the Director of Associated Tea and Agro Management Services Private Limited. And I'm probably linking it with what you also said, how the market linkage aspect is really important and how it will be helpful, how FPOs and FPC, they see this as a very important link in the Yeah. Yeah. So, Mr. Gogai, over to you and welcome. Yeah, thanks, Krishna. Mr. Gogai, आप हैं वहाँ पे? Hello, can you? Mr. Gogia, can you unmute yourself? Yeah, I think, is there a technical? I'm just trying him. Sure, no problem. If in case, Can you move on to the next speaker? You move on to next speaker, yeah, Mr. so Pinto. Right. So tries to figure out the technical issue. I'll move on to our next speaker, Mr. Frinto Anthony, who's the program manager with Arrow Foundation. Welcome, Mr. Frinto, and probably this also again can be linked back to the previous speaker's discussion, that what other avenues or what other allied sectors to say हम खेती के साथ और क्या चीजें हैं जो रूरल लाइवलीहुड में एक बहुत रोल प्ले करती हैं. Over to you, Mr. Pinto. आपको अनम्यूट. Okay. Is the voice audible? Good, now it is. Thanks. Please go ahead. Yeah, very good afternoon all. I would like to thank the team for giving this opportunity, for giving a session on this improving rural livelihoods, particularly in India as well as in the rural sectors.
So starting with presently, I am being the program manager for this RO Foundation at this Northeast states of India, posted at Shillong, capital city of Meghalaya, and looking after two projects. That is, one is at East Khasi Hills and another is at West Jantia Hills. And talking about the experience, it's about mainly into this rural livelihood as well as agriculture sectors, allied sectors. So Hindi and English दोनों will fine, as I thought कि FPO members हैं तो Hindi would be more suitable. So starting with this, the role of allied sectors, that is PC, SERI, Oleri, Agri. Agri is the common term, but in that agri के अंदर भी काफी branches हैं जो, can you move on the slides? The next one. The next one, the second slide. The second slide. Okay. हाँ ये तो जो रोल जो प्ले करता है इन दिस लाइवलीहुड सेक्शन में, कि हम एक पार्ट लेते हैं एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर के अंदर भी काफी सारे डिविजन्स हैं, जिसमें पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, काफी सारे डिविजन्स हैं जो कंस्टिट्यूट करता है एग्रीकल्चर, होलसम एग्रीकल्चर को. तो अगर हम इसके बात करें कि पहले जो चलता था समवॉट थोड़ा बीच में, अगर 80-90s में, तो उसमें ये कि एक पर्टिकुलर चीज को फोकस करा जाता था और पर्टिकुलर उसी लैंड पे वही पर्टिकुलर चीज ही बोई जाती थी, करी जाती थी. लेकिन ड्यू टू दिस, एज मिस दिव्या, ड्यू टू दिस क्लाइमेट रिस्क क्लाइमेट चेंजेस, तो एक चीज पे भरपूर जो हम एक दाव खेलते हैं कि हाँ पर्टिकुलर लैंड पे हम यही उगाएंगे और इससे ही भरण पोषण होगा. तो आज के दौर में ये चेंज हो गया है कि हम लोग एग्री के साथ अगर एक चीज कर रहे हैं, एग्रोनॉमी कर रहे हैं, तो उसके साथ में कुछ और चीज भी करें, ताकि अगर एक चीज फेल होता है या समवॉट कम होता है ड्यू टू मार्केट लिंकेज जो भी है, तो दूसरे से भरपाई हो जाए. तो उसी में ही इसका एक मोटो आता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. So that is comprised of all these aspects, जिसमें हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, ये सब आते हैं. तो इसका मुद्दा ये है कि ये क्यों लाया गया. ये मुद्दा इसलिए था कि जो चेंज इन द फार्मिंग टेक्निक्स, जो पहले जो पद्धति चलती थी, तो उसको कैसे बेटर किया जाए, ताकि हम अपना प्रोडक्शन, जो क्रॉपिंग पैटर्न है या जो भी है, उसका प्रोडक्शन या एवरेज यील्ड जो है, जो आमदनी, वो दायरा उसका बढ़ जाए. इसलिए हम एक से दूसरे चीज पे फॉलो करते थे. और ये भी था कि जो भी फार्म वेस्ट जो आता था, जो क्रॉप रेसिड्यूज जो भी आते थे, तो उसको एक बेटर प्रोडक्टिव रिसाइकल यूज में कर सकते थे, ताकि उसी का जो चीज जो है वो किसी दूसरी चीज में यूज हो जाए. नेक्स्ट स्लाइड. Next slide, please. Yeah, next slide. Move on. The third one. Next one. जो इसमें कॉन्सेप्ट जो आता है फॉर दिस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, दैट इज एन अरेंजमेंट ऑफ रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स और द बाय प्रोडक्ट्स. जो भी हम चीज करते हैं, तो उसका जो भी वेस्ट जो भी आता है, वेस्ट नहीं कहेंगे, कि जो भी प्रोडक्ट जो आता है, उसको किसी दूसरे चीज में लगा के हम उसका एक बेहतर स्रोत ले सके. दूसरा दूसरा ये पॉइंट है कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आता है वो कम कर सके. और प्रोडक्टिविटी या एक्री जो कहते हैं कि पर एकड़ में या पर हेक्टेयर में जितना प्रोडक्शन मिलता है पर यूनिट टाइम, उस पर्टिकुलर सीजन के दौरान, या 60 दिन की फसल है या 90 दिन की फसल है, 3 महीने 4 महीने की फसल जो है, तो उसमें बेहतर आमदनी हो सके. उसी के द्वारा जो हम लेबर आज के दौर में, आज के प्रेजेंट मार्केट स्टडीज में यह है कि फार्मर्स
काम तो करता है, लेकिन जो अगर हम बट्टे पे कराते हैं, बट्टा मीन्स रेंटेड वाले पे, रेंटेड वाला लेबर पे काम कराते हैं, तो आज के दौर में, आज के टाइम में जो किराया है या मेहनताना जो है लेबर का, वो बहुत ज्यादा है। तो उसी को ही इस तरह से यूटिलाइज करें कि एक के बदले 2 या 3 काम हो जाए पर डे के हिसाब से, ताकि वो रैशनलाइज कर सके हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में मेजर 6 पॉइंट्स आते हैं, जो जिसके कारण ये IFS कहलाता है। दैट इज वन बीइंग द फार्म पॉन्ड्स, जिसमें पानी का स्रोत, जो इरिगेशन या सिंचाई करना है, वो मेन मुख्य पॉइंट है। दूसरा बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक खेती की हम बात करते हैं या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जो कि आज के दौर में चल रहा है पिछले 5-10 सालों में, कि बेनतहा जो फर्टिलाइजर जो यूज होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो उसके जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, हमारे जो पीढ़ी जो है, प्रेजेंट पीढ़ी या द सेकंड जनरेशन पीढ़ी, तो उसमें खामियाजा देखा गया, जिसके कारण हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की ओर मुड़ रहे हैं। तो जिसके कारण यही बायो फर्टिलाइजर्स यूज आता है। थर्ड बिंग द बायोगैस। बायोगैस मीन्स जो भी आपका जो कैटल प्रोडक्शन, कैटल लाइफ स्टॉक है, तो उसका जो भी जो एक्सक्रीटा है या वेस्ट जो है, तो वो जो है हम उसको यूज कर सके, ताकि हम उससे जो चूल्हा चलाना है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो ताकि जो भी एक चीज से लेके दूसरे चीज को हम कंबाइन कर सके, ताकि वेस्ट ना हो। The fourth being the solar energy. This being the most important concept in this particular FS, that is integrated farming system, कि प्रेजेंटली जो भी हम लोग को ये इलेक्ट्रिसिटी जो भी मिलती है, दैट इज आपके कोयला के द्वारा या ये न्यूक्लियर फ्यूशन या हाइडल के थ्रू, पानी के थ्रू। लेकिन हमारा सोलर एनर्जी ये ऐसा है कि ये कभी ना खत्म होने वाला, फॉर द प्रेजेंट दौर के लिए कभी ना खत्म होने वाला ऐसा एनर्जी है, ताकि इसके द्वारा हम जितना भी एग्रीकल्चरल या हाउस होल्ड जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है, तो काफी हद तक हम इसका यूज कर सकें। और काफी हद तक हम सक्सेस भी हुए हैं इन द नॉर्थ ईस्टर्न, प्रेजेंटली टॉकिंग अबाउट दिस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न में ये भी है कि हाइडल इज देयर, हाइडल फॉर दिस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इफ आर टॉकिंग कंसर्निंग अबाउट दिस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कतें हैं इन दिस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इन दैट पार्ट दिस सोलर एनर्जी कम्स इनटू प्लेस, वेयर तो टोटल जो आपका चार्ज जो लगता है और दिस वन कॉस्टिंग, वो काफी कम हो जाता है, और इट्स बीइंग लेस पॉल्यूट, इट्स नेग्लिजिबल in terms of pollution level. The fifth being the vermi compost. ये जो है वर्मी कंपोस्ट इज लाइक दिस, कि जो भी आपका वेस्ट जो निकलता है, किचन से निकलता है या आपके फार्म से निकलता है, तो और गोबर जो भी आपको, जिसके पास भी लाइफ स्टॉक है, तो गोबर के थ्रू और वेस्ट मटेरियल जो ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मटेरियल जो है, दैट इज रिप्लेनिशेबल, तो उसके द्वारा हम ऑर्गेनिक खाद बना सकें विद द सपोर्ट ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स में जो है आपका केचुआ है। तो केचुआ जो उस पर्टिकुलर वेस्ट जो है, उसके उसके द्वारा ये ऑर्गेनिक खाद बनता है। थर्ड बीइंग द ग्रीन मैन्योरिंग, द सेम लाइक, बस एक्सेप्ट जिसमें केचुआ यूज नहीं होता है, जस्ट बाय द डिग्रेडेशन और डिकम्पोजिशन आपका ऑर्गेनिक खाद तैयार होता है। अब इसमें जैसे पहले बताया था, जो कंपोनेंट्स जो है दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर 6 वर्टिकल्स, तो उसके अंडर में ये सब आते हैं, दैट इज क्रॉप हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री। लाइफ स्टॉक मतलब कैटल, आपका गाय भैंस बछड़े, ये सब। पोल्ट्री में आपके मुर्गा मुर्गी, ये सब। हॉर्टिकल्चर जो आपके सब्जी जो उगते हैं, ये सब। एक्वाकल्चर कंसर्न्स विद द फिश फार्मिंग सिस्टम, मछली पालन जिसे बोलते हैं। सेरिकल्चर आपका जो सिल्क जो बनता है, जो वॉर्म्स जो है, उसके द्वारा मलबरी के थ्रू होता है।
Mushroom cultivation is also another part of this IFS that constitutes with goes along with this sericulture. Agroforestry, इसमें एग्रीकल्चर भी आता है, फॉरेस्ट्री भी आता है. तो इस बीइंग ए मेजर टर्म कि एग्रोफॉरेस्ट्री के अंदर अगर बोला जाए तो जो फॉरेस्ट कंपोनेंट्स जो हैं, जैसे हम नॉर्मली एग्रीकल्चर विथ सॉरी विद बायोगैस प्लांट्स. तो बायोगैस प्लांट्स आर दोस की जो भी आपका एक कम्युनिटी है, तो नॉर्मली बायोगैस प्लांट्स कम्युनिटी बेस पे लगाते हैं ताकि जितना भी आपका जो चूल्हा या जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो भी है वो बायोगैस के प्लांट्स के थ्रू फुलफिल हो जाए. The other one is miscellaneous enterprises that constitutes the market linkage, logistics and all. The next one. मेजर ये आता है कि why IFS is needed, integrated farming system. तो पहला रीजन ये आता है कि आपका जो रिस्क है, जो क्लाइमेट में, मेजर बीइंग द क्लाइमेट मिटिगेशन एज वेल एज द नेचुरल हजार्ड जो आता है, बाढ़ आ गया, अत्यधिक बारिश हो गई या सूखा हो गया, तो उसके कारण से वो रिस्क जो है कम करने के लिए ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग यूज करा जाता है. दूसरा है हाई इनपुट कॉस्ट. प्रेजेंटली अभी जो फर्टिलाइजर है या बीज है या आपका लैंड वाला है, लैंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है बहुत हाई है, क्योंकि नॉर्मली कमर्शियल या एग्रीकल्चर जो टैरिफ जो है उस पे मिलता है. थर्ड बीइंग द राइजिंग नीड ऑफ फूड, हीट, फाइबर, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर. द फोर्थ इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. अब एक प्रेजेंटली कंसर्निंग विद दिस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स मेनली जो यहाँ का फूड कल्चर इज नॉर्मली नॉन वेज. तो यहाँ पे एग्री एज वेल एज लाइफ स्टॉक एज वेल एज द फिश फार्मिंग वो ज्यादा है, तो जिससे आपका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है कंप्राइजिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन, मिनरल्स एंड ऑल, वो उस तरह से परिपूरित होता है. सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो आदान प्रदान वाला पार्ट रहता है, तो उसके थ्रू पूरित होता है कि अगर हम दाल, अगर लेगुमिनस प्लांट्स लगाए, दाल, दलहनी फसलें, तो उससे जो है आपको सॉइल जो है नाइट्रोजन नेचुरली मिल जाता है, ताकि आपको दूसरा अलग से आपको यूरिया देने की जरूरत ना पड़े. एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स है, अगर एक काम होगा तो दूसरा भी काम आएगा, दूसरे चीज भी यूज होंगे, जिसके कारण जो काम करने की क्षमता है या जो आपका जीडीपी और द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी वो आपका रेस करेगा. वही सेम मीनिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज वेल एज द सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि जो आपका पर्टिकुलर सोसाइटी या कम्युनिटी या पर्टिकुलर जोन जो है, क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो उसमें जितने भी चीजें जो आती हैं कंसर्निंग विद दिस इंटीग्रेटेड फार्मिंग, तो वो परिपूरित हो ताकि क्लाइमेट को और दूसरे सराउंडिंग चीजों को दिक्कत ना आए. जी 2 मिनट में बीच में बस ये अगर हम थोड़ा सा अगर आप इसको कंबाइन करके भी बता पाए तो आई थिंक जानकारी जो है वो सबके लिए दे कैन समराइज इट आल्सो. थोड़ा सा Okay, हम fine. Yes. Just move forward with this, the examples that are given in this rice fish farming and rice duck farming. So that will be much more. Just this one. जो नॉर्मली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स है, तो नॉर्मली जो नॉर्थ ईस्ट या जो ईस्टर्न पार्ट्स में जो है कंसर्निंग अबाउट दिस वन, तो एक तो चलता है द राइस डोमिनेंट स्टेट है. तो इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट दिस राइस एंड डक फार्मिंग, तो राइस एंड डक फार्मिंग जो अभी फिलहाल चल रहा है, दैट इज इन बंगाल, दैट इज दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट. तो वहां पे राइस एंड डक फार्मिंग का फायदा ये है कि जो आपका राइस जो नर्सरी फील्ड में है, और डक्स जो है बीइंग एक्वाटिक एनिमल है जो, तो उससे जो भी उसका जो ड्रॉपिंग्स जो जाता है वो एक्ट एज ए फर्टिलाइजर. और दूसरा जो भी इंसेक्ट्स जो आता है,
इन दिस राइस डोमिनेंट स्पीशीज में, दैट इज जापोनिका। जो वैरायटीज जो नॉर्मली हम यूज करते हैं दिस राइस डक फार्मिंग, दैट इज जापोनिका वैरायटी। तो जिसमें जो भी इंसेक्ट जो आता है वो डक कंज्यूम कर लेते हैं, एज वेल एज जो राइस का जो ग्रोथ है वो नेचुरल होता है, एज वेल एज उस पर्टिकुलर लैंड एरिया, जैसे पहले बताया इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आपको धान की भी खेती हो रही है और एज वेल एज नॉन वेज दैट इज डक। तो डक का भी एग यूज किया जाता है, एज वेल एज इज यूज फॉर डक एग के साथ भी एग, एज वेल एज फॉर द मीट पर्पसेस। देन कम्स द क्रॉप फिशरी पोल्ट्री फार्मिंग सिस्टम, as well as the crop livestock fishery vermicomposting. Concerning mainly with this northeast part, what I have seen कि predominantly it's a non-vegetarian part, तो यहाँ पे जो fish का भी consumption अच्छा है, as well as the piggery farming, जो piggery as well as for this मेघालय state वो काफी अच्छे से promote किया गया है। तो ये भी एक फार्मिंग सिस्टम का वो नतीजा है कि आपको एग्री के साथ लाइफ स्टॉक, जिसमें आपका ये पिगरी भी आ जाता है, एज वेल एज फिशरी, एज वेल एज वर्मी कंपोस्टिंग सिस्टम। क्योंकि जो भी आपका पिगरी का जो वेस्ट आता है दैट कैन बी यूज्ड एज ए मैन्योर एज वेल एज फॉर दिस बायोगैस। ये एक नया कॉन्सेप्ट है दैट इज बीन, जो नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि कैटल डंग या गोबर से गैस बनाने का। नॉर्थ ईस्ट में ये चलन, नॉर्थ ईस्ट में ये पार्ट अच्छा है कि कैटल इतना मात्रा में नहीं है, काउंट्स में नहीं है, यहाँ पे पिगरी ज्यादा है। तो उसका हम लेके उसका बायोगैस बना सकते हैं, ताकि जो जो कुकिंग वाला मीडियम है वो काफी हद तक बच सके। तो भी एक अच्छा एक सजेशन है, कैन वी यूज दिस लाइवस्टॉक फिशरी वर्मिकम्पोस्ट एज वेल एज piggery system into this particular northeastern parts. Can you move on the slide? This being an example, the agri-silvicultural system, तो जिसमें आपका एग्रीकल्चर भी या जो सीजनल वेज है हॉर्टिकल्चर वो भी हम यूज कर सकते हैं, एज वेल एज जो सिल्विकल्चर पार्ट जो है ट्रीज एंड श्रब, ताकि जो भी जैसे महुआ का प्लांट है ये सब जो है हम लगा सके, ताकि जिसका ये इकोनॉमिकल यील्ड ज्यादा अच्छा रहता है और जो ये सॉइल को बाइंड, मिट्टी को भी बांधे रखता है, ताकि जो पानी का बहाव आए या हवा तेज चले तो उसको भाव को रोकता भी है। नेक्स्ट वन, ये मैं पहले बता रहा था द राइस डक फार्मिंग, जो आपके नॉर्मली अभी बंगाल में चल रहा है, जिसके कारण जो राइस भी मिलता है, धान की भी खेती होती है और जो डक जो है उसका भी रेयरिंग होता है, जो इकोनॉमिकली अगर आप पर एकड़ या पर हेक्टेयर के हिसाब से कैलकुलेट करें बहुत सस्ता पड़ता है। इफ यू गो द ट्रेडिशनल वैरायटी की सिर्फ धान ही उगा रहे हैं तो उसमें ज्यादा पड़ेगा, एज वेल एज धान के साथ साथ आपको अलग से फर्टिलाइजर देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस चीज में आपको इंसेक्टिसाइड एज वेल एज द अदर मेजर फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया एंड ऑल वो काफी कम मात्रा में यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड, this being the rice fish farming for particularly for the northeastern parts, concerning this Meghalaya and all, Meghalaya, Manipur, Tripura and all, तो यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन जो है नॉनवेज है, जो कि फिश भी कंज्यूम करता है, एज वेल एज राइस जो यहाँ का स्टेपल फूड है। हम नॉर्थर्न पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पे गेहूं है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट की तरफ धान या चावल जो मेजर स्टेपल फूड है, जो मेजर कंज्यूम किया जाता है। तो उसके साथ साथ में जहाँ पे नालियाँ जो लगी हुई हैं, जहाँ पे इरिगेशन चैनल्स हैं, तो छोटे छोटे मच्छी या जो भी हैं जो नॉर्मली जो है फ्रेश वाटर फिशेस या कोल्ड वाटर फिशरीज वो हम यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग को धान और मछली जो है एक साथ मिल सके, जिससे कि आपका जो एक तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है पार्ट, और दूसरा जो इकोनॉमिक्स है ग्रो करने का, फिश फार्मिंग का या धान बोने का, वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट स्लाइड। मेजर जो आता है इन दिस फार्मिंग सिस्टम, तो कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो आपका नेचर एंड साइज ऑफ एंटरप्राइज, जो भी आप फेडरेशन को कि जो भी चीज आप बनाएंगे, जो भी चीज आप करेंगे, तो एट द लार्जर लेवल इट विल ग्रो टू ए एफपीओस और देन ऑन टू द फेडरेशन। तो फर्स्ट आता है द फार्म साइज, देन मार्केटिंग फैसिलिटीज, आपके आसपास क्या है, मंडी है या बाजार है, हाट है, उसके हिसाब से। देन द क्लाइमेट, क्लाइमेट के हिसाब से आपको जो भी वैरायटीज चूज करनी है इन एनी ऑफ द मैटर्स, दैट द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। जो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल पद्धति जो है जिसे हम करते हैं, तो उससे एडवांस क्या कर सकते हैं ताकि हमारा जो मेहनत है या लागत है वो कम हो सके। जो उसके बाद आता है सॉइल टाइप एंड कंडीशन। सॉइल या मेजर Probably फैक्टर। हमें इस हमें हमें सबमिशन करना होगा. We are not left with ओके much time, but ओके ओके, फाइन we can फाइन। always take it. But if you can summarize it, because I think ये बहुत बहुत अच्छा ये टॉपिक है जो and बहुत है लर्न करने के लिए और समझने के लिए, और इसको अगर आप समराइज कर पाएंगे तो पार्टिसिपेंट्स के लिए भी और हमारे लिए टाइम की पॉसिबिलिटी को देखते हुए. जी जी जी। ओके, एज पर द कैन आई कंटिन्यू? राइट, आप एक एज मिनट ले पर सकते हैं उसको द समराइज कर. टाइमिंग स्लॉट्स, तो या तो बेस्ट पार्ट, टोटल एक नटशेल अगर बोलूं, जो फार्मिंग सिस्टम, तो फार्मिंग सिस्टम को यही बोलूंगा कि आप जो भी करें, आप बेहतर ये देख लें कि वहाँ का मार्केट, वहाँ का इनका आपका जो प्रेजेंट इनकम लेवल, क्या लैंड होल्डिंग है आपकी, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको आपका जो प्रेजेंट स्टेटस है उसको कैसे, आपका आमदनी कैसे बढ़ाना है। उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि किस फार्मिंग सिस्टम के थ्रू आपको जाना है। बाकी हर कंट्री, हर स्टेट में, हर जिले में स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो आपको इसके लिए मदद करने के लिए रहेंगे एज वेल एज द WRMS टीम दिस। वो भी आप लोग के लिए ही है कि जो भी रिस्क मैनेजमेंट है, जो भी सॉइल कंडीशंस एज वेल एज पर्टिकुलर सॉइल कंडीशन के लिए क्या लगेगा, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। फॉर दिस, बाय दिस आई एम कंक्लूडिंग माय दिस सेशन। धन्यवाद थैंक्स धन्यवाद फॉर द। बिट्टू जी. Sorry to run you through it, but आपकी information was it is a lot of information also, but I think आपकी slide से काफी helpful है किसान भाइयों के लिए and FPOs में जो और हमारे officials जो यहाँ पे जुड़े हैं. I'll quickly ओके, take forward, yeah, and call upon Mr. Allen. And Mr. Allen, he's the CEO with East Singu Mahila Ajivika Producer Company Limited, and one of our current partners also. And welcome, Allen ji, and looking forward to hear from you. And then the time की paucity है थोड़ी, we have done, but if you can just take us through how you feel, आपने कैसे experience किया the role of technology in assuring the income or improving rural livelihood. Over to you. एलन जी, आप सुन पा रहे हैं? I think again there is some issue there. एलन जी, आप अगर सुन पा रहे हैं या I can't actually see you. I would have unmuted you. Else, do we have Mr. Lakhi here? नहीं, अभी तो दूसरे बंदे का चल रहा है, करने दो. We have another speaker, Mr. Lakhi, who was not able to connect earlier. I'm not Anand ji is there.
If you can request Alan ji to start. Yeah, I called him out. Alan जी आप सुन पा रहे हैं या आपका ऑडियो अभी ठीक है? I can't hear you. Alan ji, we cannot hear you. Can you be louder? हेलो जी अब आ रही है आवाज. अब आ रही है आपकी आवाज. WRMS Alan ji, you will have to be louder. We can't hear you. जी आपको थोड़ा पास आना पड़ेगा अगर फोन है या अगर आपका ईयरपीस है तो. अभी आ रही है आवाज? बिल्कुल ठीक. थैंक यू. ये मैं कह रहा था जी आ रही है. कि टेक्नोलॉजी कैसे फार्मर्स को हेल्प करता है और उनको गारंटीड इनकम देने पे जो काम करता है, क्या उनका टेक्नोलॉजी का रोल होता है, उस पे मैं थोड़ा कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगा. जैसे WRMS के साथ हम लोग अभी काम कर ही रहे हैं, एज यू नो, कि किस तरह से हम लोग बेसिकली स्टार्ट किए थे. हम लोग लास्ट ईयर इसे स्टार्ट किए थे, और टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट होता है एक फार्मर के लाइफ में, उनके प्रोडक्शन, उनके सोइंग पैटर्न में, उनके हार्वेस्टिंग सिस्टम में, उनके मार्केट लिंकेजेस में. इसके बारे में कुछ जो हम लोग जो एक्सपीरियंस किए हैं एज एन FPO, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ. अब पहला चीज है, अगर कोई किसान अगर टेक्नोलॉजी अगर अपने जो वर्किंग लाइफस्टाइल, जो फार्मिंग स्टाइल में अगर इनकलकेट करता है या अपने जीवन में लाता है, तो सबसे पहला उनको क्या फायदा होता है कि वो एक मेजर बेनिफिट होता है कि उनका जो रिस्क जो होता है, वो रिस्क जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, वो बहुत कम हो जाता है. रिस्क इन द सेंस, आपको एग्री इनपुट में जो आप बीज बो रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज करने से फायदा होता है कि सॉइल के नेचर के हिसाब से कौन सा बीज लगाना चाहिए, इसमें उनको फायदा मिलता है. बहुत बार होता है कि ट्रेडिशनल मेथड में अगर कोई किसान जाता है, वो रेगुलर, जैसे प्रीवियस पैनलिस्ट लोग बोल रहे थे कि ट्रेडिशनल वे में एक रेगुलर फार्मिंग ही करते हैं. बट टेक्नोलॉजी अगर यूज किया जाए तो किसान को इसमें फायदा होता है कि कौन से सीजन में कौन सा बीज उनको बोना है, इसकी जानकारी उन्हें मिलती है. अब इन केस अगर हम लोग लेते हैं कि WRMS या टेक्नोलॉजी जो हम लोगों के साथ वो लोग साझा किए हैं WRMS टीम ने, उससे हमारे फार्मर्स कैसे बेनिफिट हुए हैं. सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं, पैडी के साथ हम लोगों ने काम किया था. पैडी के साथ काम करने में क्या हुआ कि सबसे पहले एक सॉइल टेस्टिंग हुआ. सबसे पहले जियो टैगिंग किया गया. जियो टैगिंग करने के बाद सॉइल टेस्टिंग हुआ. फिर सॉइल टेस्टिंग के बाद फिर कौन सा वैरायटी ऑफ सीड्स उस प्लॉट में सो करना है या बोना है, वो डिसाइड हुआ. फिर वो सीड्स को हमने सप्लाई किया. फिर वो कितने दिनों के अंदर ट्रांसप्लांट होना है, वो एक चार्ट बना. फिर वो चार्ट बनने का ट्रांसप्लांट हुआ. Alan ji, you're not audible. I think there is some technical issue. Yes. Alan ji, you're not audible. एलन जी सुन नहीं पा रहे हैं हम आपको.
हेलो, जी जी जी। Now अब you- आवाज आ रही है? जी एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट करके फिर मैं जी। शायद हो सकता है उसके लिए प्रॉब्लम हो थोड़ा रहा सा, हाँ जी हाँ जी, तो थोड़ा टाइम को देखते हुए भी आप बोलिए बोलिए, आ रही है हो। बस। हाँ, ये इससे फायदा क्या होता है टेक्नोलॉजी का कि हम लोग को जो पैडी पे जो हम लोग यूज किए उससे टाइमली हमारे फार्मर्स को इंफॉर्मेशन मिला कि कौन सा डिजीज पे आने वाला है, उसके रोकथाम के लिए किस तरह का दवाई डालना है या जो खाद डालने का है वो टाइम पे, क्योंकि किसान जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से सारे काम करते हैं। क्योंकि हम लोग झारखंड में है तो यहाँ के किसान के पास जो लैंड है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड करीबन 30 डेसिमल पर फार्मर्स का हमारा है यहाँ पे, एक एवरेज अगर देखा जाए तो उन किसानों को क्या है कि इंफॉर्मेशन जब मिलता है तो वो उस हिसाब से वो काम करे। और पैडी का सीजन जो लास्ट ईयर जो था हमारा, कुछ ही लोगों से, बहुत ज्यादा लोगों के साथ हम लोगों ने काम नहीं किया है, करीबन 90 और 100 फार्मर्स के साथ शायद ऐसा काम किया है हम लोगों ने, और उनका रिस्पांस बड़ा अच्छा था। उन लोगों ने सारा अपने जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर किया, जिससे हमें फील हुआ कि टेक्नोलॉजी जो इस साल उन लोग यूज किए थे, पिछले साल तक उन लोग ट्रेडिशनल यूज कर रहे थे, और जो करंट यूज किया है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर आ रहा है। तो ये एक बेनिफिट मिलता है टेक्नोलॉजी अगर फार्मर को उनके फार्मिंग के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो। दूसरा है कि हमारा जो डिमांड है, टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर किसान को पता चल जाए कि हमारा 10 दिन बाद प्रोडक्शन होने वाला है, तो हमारे लिए जो दूर के बाजार है उनको हम लिंकेज कर सकते हैं। हमारे पास अभी ऐसे है व्यवस्था, व्हाट्सएप है, फोन है, इस पे हम लोग का क्या है कि 10 दिन पहले हमें पता चल जाएगा कि भाई कि 10 से 15 दिन बाद हमारा प्रोडक्शन इतना होने वाला है। मान के फॉर एग्जांपल 1 टन या 15 टन का हमारा प्रोडक्शन होने वाला है, तो हम उस 15 टन के लिए जो है वो बेस्ट डील हम लोग क्रैक कर सकते हैं अपने अगल बगल या कहीं दूर दराज एरिया में भी। तो टेक्नोलॉजी जो है वो डिमांड और सप्लाई में भी हेल्प करता है, आपका फार्म मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है टेक्नोलॉजी। अभी हम लोग एक हमारे एफपीओ में हम लोग जो कस्टम हायरिंग सिस्टम या कस्टम हायरिंग जो फैसिलिटी है वो हम लोग अपने एफपीओ में इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। इससे क्या फायदा होता है किसान को कि जो मैनुअल लेबर से काम होता था वो हम लोग एक ऐप के थ्रू किसानों को रजिस्टर करके और वहां के ही जो एंटरप्रेन्योर्स है या एंटरप्रेन्योर्स या जो ट्रैक्टर मालिक है, रोटावेटर मालिक है, इनको जोड़ लिए है उस ऐप के थ्रू। और अगर किसी किसान को जरूरत होता है तो वो उस ऐप में जाता है और ऐप के माध्यम से वो अपने अगल बगल के एंटरप्रेन्योर को मैप कर लेता है या उनको फोन करके पूछ लेता है कि भैया आपका ट्रैक्टर का क्या रेट लगेगा, मेरे को इस तारीख को आज से 1 सप्ताह बाद मुझे जुताई के लिए चाहिए। फायदा यहाँ क्या हुआ कि जो मैनुअल जो बुलक कार्ट से हो रहा था या जो ट्रेडिशनल वे से हो रहा था वो अब उठ के हमारा मैकेनाइज्ड वे में आ गया। अब मैकेनाइज्ड में आने से क्या हुआ कि उनका जो काम है 1 एकड़ का खेती जो जो जोतना था वो 1 दिन में वो काम हो जा रहा था, जिसके लिए पहले उनको 1 सप्ताह लग रहा था या 10 दिन लग रहा था या 4 दिन लग रहा था। यहाँ पे उनका पैसा का बचत होता है, टाइम का बचत होता है, वो मोर ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं इस बेसिस इस मेथड से। दूसरा है और एक चीज है कि टेक्नोलॉजी हमारे कलेक्शन सेंटर्स में हम लोगों ने यूज किया। टेक्नोलॉजी कैसे यूज किया, एक ऐप जो है जिसपे सीएचसी का भी है, उसी पे फार्मर अपने
प्रोड्यूस का फोटो भी अपलोड कर दिए और उस पे रेट्स लिख दिए। या हमारे तरफ से होता है कि हम लोग उस ऐप में अगर हमने परचेस करना होता है तो हम लोग क्वालिटी लिख देते हैं कि हमें ए ग्रेड का क्वालिटी चाहिए, बी ग्रेड का क्वालिटी चाहिए, या सी ग्रेड का क्वालिटी चाहिए, या साइज लिख देते हैं और उस पे हम लोग रेट्स बता देते हैं कि भाई कि 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया रेट्स दे देते हैं। अब हमारे पास करीबन वी हैव अ फार्मर बेस ऑफ अराउंड 12,000 फार्मर्स हमारे एफपीओ के साथ जुड़े हुए हैं। सारों के पास चला जाता है ये मैसेज और वो उस मैसेज को देखते हैं, फिर हमारे कलेक्शन सेंटर पे आके बता देते हैं कि भाई कि हमारा यहाँ पे इस गांव में या इस कस्बा में हमारा इतना टमाटर है, या इतने एकड़ में हमारा टमाटर है, या बंद गोभी है, या फूल गोभी है, या ओकरा है। वो हम लोग जाके उसे देख लेते हैं और फिर गाड़ी भेज के फिर उसे मंगवा लेते हैं, या फिर कुछ केसेस में किसान खुद हमारे पास ले आता है। जहाँ क्वांटिटी ह्यूज होता है तो हम लोग वहाँ खेत से ही उठा लेते हैं। तो कहने का यह है तात्पर्य कि टेक्नोलॉजी हम लोगों ने जब से यूज करना चालू किया, किसान का जो है वो टाइम भी बच रहा है। पहले किसान होता था मंडी में जाता था, अब उन्हें मंडी जाने के बजाय आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर में हमारा कलेक्शन सेंटर मिल जा रहा है। तो किसान का टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है। वही जो समय बच रहा है उसमें वो कुछ और काम कर ले रहा है, खेती बाड़ी का कुछ और काम कर ले रहा है। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं किसान के जीवन में, या उनके प्रोडक्शन या हार्वेस्टिंग या उनके फार्मिंग पैटर्न में, तो हम लोग समय के साथ साथ उनका समय का बचत करते हैं हुए उनका इनकम बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का और एक फायदा हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि अ, जो डिजीजेस जो लगते हैं क्रॉप्स में, उसका बिफोर हैंड हमें पता चल जा रहा है। इंफॉर्मेशन हमारे किसान को पहले पता चल जा रहा है कि भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अभी होने वाला है, या फंगल डिजीज होने वाला है, ये या प्रकोप आने वाला है। ये सारे चीजों की जानकारी पहले होने से किसान बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज करने, या उनका जो पैसा जो जाता है दवाई छिड़कने में, वो बहुत कम हो जाता है। राइट राइट। अलन जी, आई थिंक आपने फर्स्ट हैंड सब ये टेक्नोलॉजी के साथ और प्रोग्राम का जो पैकेज्ड जी एक्सपीरियंस जिसको मैं बोलूँगा, आपके साथ जुड़े हुए किसानों ने और दीदी लोग जो विमेन फार्मर जो उन सबने भी लिया। एंड करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर कि मेरे हमारे टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा फार्मर्स का, वो उन्हीं की जुबानी मैंने आप लोगों को अभी बताया। जी जी उनका फायदा बहुत हुआ है और प्रोडक्शन के साथ साथ उनको मार्केट लिंकेजेस देने के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है पिछले साल। बहुत तो काम नहीं किया मगर अभी स्टार्ट ही किया है। इनफैक्ट पिछले साल वाटरमेलन पे हम लोगों ने काम किया, टमाटो पे काम किया है। और टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो फिर हम लोग को हो सकता था कि उतना काम हम लोग नहीं कर पाते। इसी बात पे मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा बिकॉज आई एम ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम। धन्यवाद धन्यवाद अलन जी। धन्यवाद। थैंक यू आपसे आपसे और भी बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर में कुछ होता है तो। एंड मिस्टर लाकी, आई यू देयर? I still can't hear you if in case you're there. Hello everyone. Hi, finally we are able to connect.
Okay, is it audible right now? Absolutely, absolutely. So I'll just quickly give a bit your background, though it's on the screen. So Mr. Laki is the director with Associated Tea and Agro Management Services, and he would actually give us a very quick insight. Sorry to put it like that, Mr. Laki, but we are actually running out of time. Okay. How the market linkages you think has helped or will help the FPO and FPCs. Over to you. And we'll have to keep it, yeah. So if you can summarize, of course, you have a presentation I see, but more from a summarized perspective, if you can put it out so that, and then we can always take it up from there. Okay. Thank you. It's not connecting right now, the Zoom. Okay, but we all can. Okay. Okay, I just like to introduction about ATMS. Sure. ATMS is a company specialized and dedicated in promoting farmer producer company. ATMS has been established as an agricultural advisory company operative in Assam and northeast of India. Okay, just I am giving about the market linkage for FPO and FPCs in developing rural livelihood. Collectivization of producers, especially small and marginal farmers, into farmer-producer organization has emerged as one of the most effective pathways to address the many challenges of agriculture, but most importantly, improve access to investment, technology, and input and markets. Department of Agriculture and Corporation, Ministry of Agriculture, Government of India has identified farmer-producer organization registered under the specialized provision of the Companies Act 1956 as the most appropriate institutional form around which to mobilize farmers and build their capacity to collectively leverage their production and marketing strength. Is it audible, everyone? Yeah, it's audible. Okay. To facilitate this process, the Small Farmers Agribusiness Consortium, we call SFSC, is mandated by Department of Agriculture and Corporation, Ministry of Agriculture, Government of India, to support the state governments in the formation of farmer-producer organization. The aim is to enhance farmers' competitiveness and increase their advantage in emerging market opportunities. The FPO's major operation and business include supply of seed, fertilizers and machinery, market linkages, training and networking, and financial and technical advice. NABARD is also supporting FPCs with the combination of capacity building funds as well as loans and refinance to banks who lend to FPCs. Beside NABARD and SFPC, there are private banks, non-government agencies, which are promoting FPC through finance and capacity building. Lot of interest have been generated in FPC by commodity exchanges who are connecting with producer companies for linkage and with exchanges. NDDB has also taken a lead in promoting and creating business linkage in dairy. There has been good progress in FPO formation, market linkages, and there are many success stories from Madhya Pradesh, Assam, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and other states to exemplify. However, much needs to be done to provide additional capital and capability to the members of the FPO in country by leveraging on partnership technology and capacity formations. Some of the important benefits of the organizing farmers into collectives are as under. Cost of production can be reduced by the procuring all necessary inputs in bulk at wholesale rates. Aggregation of produce and bulk transport reduces marketing cost, thus enhancing net income of the producer. Building the scale through producer aggregation enables to take advantage of economies of scale and attracts trader to collect produce at farm gate. Access to modern technologies, facilitation of capacity building, extension, and training on production technologies and ensuring traceability of agriculture produce.
Post-harvest losses can be minimized through value addition and efficient management of value chain. Regular supply of produce and quality control is possible through proper planning and management. And another one is price fluctuation. Price fluctuation can be managed if there are practices like contract farming, like agreements, etc. Easy in communication for dissemination of information about price, volume, and other farming-related advisories. And access to financial resources against by stock without collaterals. And next one is easy access of funds and other support services by the governments, donors, and service providers. And last one is improved bargaining power and social capital building. One of the major challenges in India is aggregating small and marginal farmers to enable them to integrate with agricultural markets. Some of the problems faced in this regard include absence of economies of scale, access to information, and inability of such farmers to participate in the price discovery mechanism. This challenge also assumes importance due to two more reasons. First one is the rising demand for quality agricultural food products, and second one is the increasing focus on the efficiency of the entire agricultural value chain to ensure remunerative prices to farmers as well as affordable price to consumers. FPO have been considered as an apt institutional form of aggregating small and marginal farmers that can tackle the above challenge effectively. Farmer members herein are able to leverage their collective strength and bargaining power to access to financial inputs, leading to reduction of transaction cost. At the same time, they can tap high-value markets and enter into the partnerships with other entities and equitable terms. Agriculture has always been a lifeline of the Indian economy, providing livelihood to the millions of farmers. However, high production cost and low access to credit, as well as poor market linkage, hinder to the sector's growth. This adversely impact India's ranks of small and marginal farmers, which comprises about 85% of the sectors. FPOs are the one such farmers aggregate and organization mechanism mobilizing farmers collective that seeks to improve their one economic and social situation and that of their communities. Although still nascent, they have come a long way in the past several years and are the first becoming a critical component of the agricultural value chain in India. FPOs have potential to give farmers better bargaining power and create a more transparent agri-market, and they need to be nurtured to their full potential. And FPO is a corporate body under the Companies Act, and its activities would range from production, harvesting, processing, procurement, grading, marketing, or exporting of primary produce. It of course provides sharing of profits and benefits among the members. Government of India encourages state governments to support FPO promotion under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana, we call RKVY. At the same time, the Small Marginal Agribusiness Consortium (SFAC) and NABARD also promote such FPOs. Experts opine that capacity building of farmer members of FPO is of utmost importance to strengthen backward and forward linkage. For value chain intervention, some of the key areas of action include skill development, business planning, extension management, technological platforms, market intelligence, and exposure visits. Our approach is for backward integration, processing, and forward linkage for a successful promotion of FPO and FPCs. Now you can see our methodology and approach to CBBO. So, like, I would just request you to, if you can just run us through your methodology in a 50 seconds time. We are running out of time. If you can just, quickly run us through your models of So if you can just run us through this, and we'll have to move on to the This is next. all our professional support team here.
You can see the professional support team. This is the post-professional support services. This is for fraud market linkage using Adventure, Iddu, Agrotech, and Krushi Calculate. And this is all our empanelments like SFSC for Empanel Resource Institute, NABARD for Resource Support Agency, BARD as a anchor agency, NIRAMF as a service provider, ICR as a business incubator, and NIAM as a training partner. This is our engagement with farmers. We have promoted an under promotion of 95 FPCs comprising 80,000 of farmers across Assam, Arunachal, and Nagaland, and held holding support from NABARD and promoted 40 FPOs comprising 20,000 farmers. Market linkage with large corporates and conducted 100 plus young training in entire Northeast. The capacity building of 600 board members of FPCs on business planning, governance, and legal compliance. This is all about the market linkage. Right. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you, Mr. Lucky. Thank you for giving us the full insight of how you function and how you handled it. So many FPCs and FPOs. Great to hear from you. I'll quickly move on to our final speaker, Mr. Piyush Verma. Piyush ji is there. Yes, he's consultant with NAPCONS, and a very important topic. A very basic topic also, that how sustainable agriculture leads to improve the livelihood income. Piyush ji, over to you. And as you would know, we are absolutely running out of time. So जितना आप उसको main points को summarize कर पाएंगे, and would be a great help, and सबके लिए समझने में भी आसानी रहेगी. Thank you. Hello. Hello. जी, बिल्कुल आ रही है आवाज. Hello. I am audible. जी. Okay. Thanks to all of you for giving opportunity me for speaking this topic. Actually, a rural livelihood topic in is rural. What is a rural livelihood? Actually, it's a criteria divided by 3 parts. Okay. Production based livelihood and marketing based livelihood. मिक्स लैंग्वेज भी रखिएगा तो आसान है. जैसे आप जानते हैं, हमारे सब एफपीओ से किसान भाई और जो ऑफिशियल्स हैं वो भी हैं. मिक्स लैंग्वेज के लिए. Okay. I will speak in Hindi. Okay, no problem. Actually, livelihood pattern की बात यदि हम करते हैं तो ये 4 भागों में डिवाइड होता है livelihood. बेसिकली जो मेरी समझ में है, एक होती है प्रोडक्शन बेस्ड livelihood, एक सेकंड होती है लेबर बेस्ड livelihood, थर्ड होती है एक्सचेंज और मार्केट बेस्ड livelihood, एंड फोर्थ होती है ट्रांसफर बेस्ड livelihood. 4 तरह की livelihood को हम मैनेजमेंट किया जाता है हमारी सोसाइटीज में, हमारे समाज में, कि किस प्रकार की लाइवलीहुड इंप्रूव हो. सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है एग्रीकल्चर बेस है बेसिकली, कि एग्रीकल्चर रूरल लाइवलीहुड को हम कैसे इंप्रूव करेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू द क्रॉप प्रैक्टिसाइजिंग. ठीक है. तो इसके लिए जो मेरी समझ है, जो मैंने काम किया हुआ है एफपीओ के साथ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ मैंने काफी काम किया हुआ है, और हम ने किसानों के साथ ये चीज को फील किया है कि किसानों की लाइवलीहुड इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर ले जाएं. और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बेसिकली 3 भागों में की जाती है. इसको लिए हमको प्रोडक्शन, हमको इन्वायरमेंट देखना होता है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी. ये 3 पार्ट में कोई भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन 3 पार्ट में की जाएगी. और इसके लिए हमको इस तरह की प्रैक्टिस को हमें उनके बीच में प्रमोट करना होगा कि हमारे फार्मर्स को एक अच्छी इनकम भी मिल जाए, और प्लस हमारे लिए आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बैलेंस भी हो, क्योंकि आज की 4 तारीख में इन्वायरमेंट बैलेंस होना बहुत जरूरी हो गया है. एंड बेसिकली हमारे फार्मर जो है उनकी भी लैंड होल्डिंग बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग है, तो उन स्मॉल लैंड होल्डिंग के साथ काम करना एक चैलेंज है एग्रीकल्चर में. उसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट भी हमें कम करनी होगी. बेसिकली इसके लिए हमने एक प्रोग्राम किया था, जो कि सॉरी टेरिटोर नीदरलैंड के तरह प्रोग्राम था, राउंड पेपर ऑन स्पॉन्सर सोयाबीन. उस प्रोग्राम के अंदर हमने किसानों को पूरा ये चीजें सिखाया था, प्लस उनको हमने सर्टिफिकेट भी दिलवाया था कि किस प्रकार से उनका पॉल्यूशन बचेगा, ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करें, वो प्लस वो एनिमल्स का यूज करें, प्लस उनका सोशल जो है वुमेन्स को भी उनको फार्मिंग में लाना चाहिए,
और कई तरह से उनको हम लोगों ने मोटिवेट करके ये काम किया था। और फिर हम लोगों ने आफ्टर सर्टिफिकेट लिया था, इंट्रोसर्ट के द्वारा एक सर्टिफिकेट हमको मिला था, और उस सर्टिफिकेट के द्वारा फार्मर की मार्केटिंग करवाई गई थी उस सोयाबीन प्रोडक्ट की, और उनको प्रीमियम अमाउंट भी हम लोगों ने दिलवाया। तो ये एक इनिशिएट था तो कि हम लोगों ने किया था, और इसके अलावा भी और कई तरह के इनिशिएट भी किया जाता है इसमें। और क्योंकि समय मुझे लगता है कम है, तो मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। बेसिकली मैं इसके साथ यही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के द्वारा यही चीजें इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हुए उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे की जाए, उनको मार्केट कैसे दिलाया जाए, इस चीज के ऊपर ही हमें फोकस करके हम काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग इसी को हम लोग प्रमोट भी कर रहे हैं। थैंक्स। धन्यवाद पीयूष जी, थैंक यू रियली फॉर समराइजिंग इट एंड टू पुट अक्रॉस सारे मेन जो एस्पेक्ट्स हैं इन अ वेरी nutshell. With that, we come to the end of the session. Looking at the time, टाइम की कमी होने की वजह से अगर कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं या कुछ अब पूछना चाहते हैं तो प्रॉब्ली 2 मिनट का टाइम हमारे पास है। किसी भी पैनलिस्ट से अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। अमितेश जी, जी I just would like to ask one question from Mr. Lingdo. He has mentioned in his presentation that they have induced 3-0 farming in Meghalaya. Yeah. I just want to ask Mr. Lingdo, what are 3-0? First one you have mentioned zero budgeting, but Yeah. what are the rest two? No, I said not zero, not all 3-0 system. One is a zero. Just hold on. One is zero budget. Okay. Zero budget farming. The other one is zero poverty. Okay. And zero marketing. Okay. Zero budget marketing. So in zero budget marketing, it's mean that the SSGs and the village organization, they will contribute in to start any collective market. In that way, they don't require any cash, but through their trust and social building exercise, they will be able to do marketing without any physical money, but with the production when available with them, they can start the market. So that is what we call zero marketing. Yeah, thank you very much. Thank you, Linguji. I think we are absolutely out of time, and what we'll do is हम ये पूरा जो सेशन है YouTube रिकॉर्डिंग जो है ये शेयर करेंगे, और आपको हमारे स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी दिख रहा होगा। आपके कोई भी जो सवाल हैं किसी भी पैनलिस्ट से या इन जनरल आप यहाँ पे भेज के हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। In case Anuj, if you are there, last would I just wanted to have a very quick question since सब लोग यहाँ पे थे, that in few lines that how SecuFarm services can directly benefit the FPOs. What as FPO CEOs and heads they can look forward to and then they can convey to the farmers. Let's say आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी कहना चाहें, दो लाइन। श्योर। मतलब जो SecuFarm सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं, हम ये किसी भी स्टेट में और किसी भी क्रॉप में स्टार्ट कर सकते हैं लाइवलीहुड प्रमोशन एक्टिविटी के साथ। आइडिया ये है कि एग्रीकल्चर लाइवलीहुड के अंदर जो काम हो रहे हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट कैसे इंटीग्रेट किया जाए। SecuFarm उसके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत मदद कर सकता है एग्रीकल्चर लाइवलीहुड प्रमोशन।
वेरियस लाइवलीहुड स्कीम्स फेस कर रही है एज फार एज एग्रीकल्चर, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हम बिहार में कुकमेंट कंटेंट इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हल्दी की, उसके ऊपर स्टडी करके हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो विल टच विद बिहार लाइवलीहुड फॉर दैट। उन्होंने हमें सजेशन दिया था कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो हमने उसके ऊपर काम किया, रिसर्च एनालिसिस किया है, अभी हम उसको एक ट्रायल करेंगे। तो इस तरह का नया कुछ जो चैलेंजेस जो एग्रीकल्चर में फेस हो रहे हैं उनको उनको एड्रेस करना, और उससे रिलेटेड एश्योरेंसेस देना, रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट देना फार्मर को, ताकि वो अडॉप्शन कर सके उस टेक्नोलॉजी का, ये सेक्यूफार्म का उद्देश्य है। और हम चाहेंगे कि हम सभी लाइवलीहुड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इसमें काम करें, एफपीओज के साथ काम करें। इसमें कोई इनिशियल कॉस्ट की इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ फार्मर्स को अगर वो सर्विस लेते हैं तब उसका पेमेंट करना पड़ता है, बट उसमें बेनिफिट्स अश्योर्ड हैं, तो पेमेंट ऑब्वियसली जितने बेनिफिट हैं उससे काफ़ी कम होता है। सो एक एडवांटेज ये है। और हम ईमेल आईडी स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और we will also get in touch with you and will specifically talk with each one of you. And thanks a lot for coming, and it was pleasure to have this audience, and we are looking forward to interactions in future. Thank you. Thank you, Anuj, for your closing remarks. And with this, we come to the end of the session. Once again, सारे participants, all speakers, panelists, आप सबका धन्यवाद. Thank you for taking time and giving us insights of how you work, what are the challenges, and we really look forward to be associated and do a collaboration. Thank you all. We'll end the session now. Thanks.